कसं काय मंडळी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेंशिन इम्पैक्ट। और अपन बहुत ही जल्द मॉन्स्टर सिटी लीव करने वाले हैं इस मेड के साथ। ये एक मेड है, मुझे अभी पता चला। और इसका एक जो वेपन है ये भी मैंने पुल कर दिया। ये बहुत अच्छा तगड़ा वेपन है इसके लिए। सो अपन मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ, बट उसका मटेरियल तो संडे को मिलेगा। बट हमें उससे पहले मॉन्स्टर सिटी लीव करने से पहले 2 से 3 मिशंस करने बाकी है। स्टोरी लाइन पे आई थिंक सो कैरेक्टर्स की वो करनी बाकी है, तो वो अपन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और अभी आप देखो ने क्या ये देख सकते हो, स्टोरी मिशन है, वुल्फ टेरर है और लेजेंड्स ऑफ द डार्क नाइट हीरो। रिसेंटली रूमर्स अबाउट अ सर्टन डार्क नाइट हीरो हैज बीन सर्कुलेटिंग अराउंड द मॉन्स्टर सिटी। चलो लेट्स गो, यहाँ पे चल जाते हैं अपन और देखते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे टेलीपोर्ट पॉइंट है ना। तो So, you've got a taste for adventure too, huh? या I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. मोस्ट पीपल कौन से बता सकते हो? It's the tale of the Dark Knight Hero. Hey, look. Do you want to hear the story or not? What? What did the bartender just say? Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. हाँ यार, किसी ने देखा तो नहीं है, मिड नाइट में आता है, अपना धमाल करके जाता है। आइडेंटिटी पूछ लेते अपन। I doubt anyone knows but him. Maybe he enjoys being a man of mystery. After all, it's a good way to get the ladies' attention. हाहा Any guy in the tavern could tell you that. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. Uh, I need to serve some customers. हाँ, तू जरा धंधा देख ले। Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend, but just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. लेट्स गो पायबान, तुझे तो चलना ही है अभी। स्टार्ट इट। अरे चलना बाबा। तो आपने को डार्क नाइट हीरो के बद्दल कुछ तो भी पूछना है, मतलब कि इंफॉर्मेशन निकालनी है। इसमें तो अपन माहिर है, डिटेक्टिव बन जाते हैं अपन शार्लॉक होम जैसे। लेट्स गो। प्लाजा के ये प्लाजा है? अरे भाई, अच्छा ये एरिया को प्लाजा बोलते हैं। तो आपने को पूछना पड़ेगा लुक फॉर द ऑब्जेक्टिव। ये दो बंदे तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनका काम है। ये लड़की बता पाएंगे कुछ ना कुछ तो। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अबाउट, हाँ डार्क नाइट हीरो के बद्दल बता। इज दैट फ्रॉम अ फेरी टेल और अ नोवेल और समथिंग? अरे साली डोरेमोन की बुक से तो निकल जा। ये बॉस कैट। You want to find out about the Dark Knight Hero? Yes. Look no further. It's me. I am the Dark Knight Hero. लड़की हो सकती है डार्क नाइट हीरो? हीरोइन चाहिए फिर You're तो। right. I'm not. I was joking. Jokes aside, I do think that the Dark Knight Hero and I have one thing in common. It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. हाँ Why is that? क्योंकि रिकाम धंधे करने वाले लोग ही रिच रहते। People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? So you just wanted to flaunt your wealth? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the cat's tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. हाँ ना यार, अपने को तो सिक्योरिटी से पूछा ही नहीं अपने को। लेट्स गो। सिक्योरिटी भैया, बस गेट पे आके बस ये बोलना नहीं रहता कि वेलकम टू द मॉन्स्टर।
डार्क नाइट हीरो के बादल थोड़ा सा पूछना पड़ता है भाई, खबर रखते जाओ तुम। धंधा क्या क्या कर रहे हो, बिजनेस क्या कर रहे हो, सॉरी काम क्या कर रहे हो तुम, बिजनेस ही बोल रहा हूँ मैं। भाई देख रहे हो, रिस्पेक्ट देख रहे हो, छाती पे थाप थाप मार दिया उसने। आई हैवंट हर्ड थिंग्स नाइन थिंग, आई एम रियली आउट ऑफ द लूप। ये तो दुनिया में ही नहीं रहता भाई, आउट ऑफ द लूप बोल रहा है। तू You want बता to भाई। know about him? In यस। fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. अबे यार इसकी भी कहानी। Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. You think the Dark Knight hero might be the one of the night? Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Avonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. ओ फ्लावर वाली बंदी, तूने मेरी बुक घुमाई थी। आजा आजा, यही है फ्लावर वाली बंदी, इससे पूछना पड़ेगा। उसका भी यार कहना सच में इतना पावरफुल है बंदा, तो नाइट ऑफ फोमोनियस में क्यों नहीं है। और मुझे भी लगता है कि एक नाइट्स में से ही एक आधा बंदा होगा जो कि किया या फिर ड्यूक होगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे ड्यूक लग रहा है, What's wrong with me? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी बहुत छुपाता है। उसने अपना लेवल्स भी बताया नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि ग्रैंड मास्टर जीन के नीचे ही सारे किया ये एम्बर काम करते हैं ना, तो ड्यूक का पता नहीं मुझे। Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero! Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do if Master Diluc ever finds out? ये मैंने क्या बोला था, मास्टर ड्यूक है। What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think Diluc was the one for me, but ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. All I remember is seeing a flash of fire, but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. यस मास्टर ड्यूक। It lit up the whole area in an instant. I remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into it. लेट्स गो। Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. इधर से चलना था मुझे पता था, जैसे कि उसने पायरो या था ना, पायरो एलिमेंट्स यानी कि ड्यूक का ही है। ड्यूक मैंने जैसे कि कह रहा हूँ, ड्यूक ने क्या 5 स्टार का है। मैं 2 से 3
एपिसोड से बता रहा था ड्यूक बहुत अच्छा है। तो शैंगलिंग और ड्यूक ये पायरो एलिमेंट्स है, तो लगा ही था बंदा है। उसकी टांग देख रहे हो, देख रहे हो। ओ माय गॉड, देख रहे हो, पायरो मतलब कि ड्यूक ही है। ये मास्टर जी ने ले बेटा पटके से। The Dark Knight hero is Master Diluc? ड्यूक, कोई ड्यूक बोलता है, क्यों ड्यूक बोलता है? आह, After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. The Dark Knight hero. I knew it was you all along. मुझे भी पता था ना, तो अपन यही चुनेंगे। Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it. Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. भाई ये कभी भी सैवेज ही बन जाती है बे पायमान। कैप्टन Pie. Pie? Captain Pyro. हाँ, पायरो बहुत अच्छा है क्योंकि पायरो से इंडिकेट होगा ना ये। Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. ओ यार, ये बेस से ऑर्डर बहुत ज्यादा कर रहा है ये तो। Again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance, considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions. Their persistence is unusual. Have you been dealing with them alone the whole time? Why don't you get the Knight of Harmonious to help? हाँ यार, Who would be helping whom is debatable. क्या The हुआ Knights अबे? are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. So this is a job for the mighty Duke then? It seems you have a history with the Knights. हाँ, What's past is past. I would prefer not to discuss it. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. thank you. बता। What is it, Master Diluc? Your wish is our command. You must keep my identity a secret. Yes. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. हाँ, मुझे पता है, I think so. Footsteps. बंदे आ गए। What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, Thank you. don't tell a soul. Yes. 1 इंच भर भी नहीं बोलूंगा मैं। अरे अभी तो तू बोल रहा था मुझे जल्दी जाना है, निकलना। स्क्रीन टाइम पे कितना 10 सेकंड ले रहा है ये तो। अरे चल। Hey, you're just gonna leave us like this? काय का यार, ये तो 30-40 के अपन कैरेक्टर है। आ जाओ, आ जा, ले बेटे, आ ले बेटे। अरे भाई भाई, अरे भाई भाई, मेरी ये 20 लेवल की है ना, इसकी वजह से। अरे अरे अरे, लो। हाँ, बता ना जल्दी। Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. 4 भाषा में बता दिया उसने ना। टाटा बाय बाय नहीं है, चलो। Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero. Oh, the Dark Knight hero is, her! You, the hero who safeguards Mondstadt from the shadows.
On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. Thank you. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh, Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks, but I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. Some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. मुझे लगा कि भैया वो रिस्पेक्ट देता है, बट ये तो उनकी आई थिंक सो आदत है किसी से भी बात करने की, छाती ठोक के. सो ये पायमन भी ना बीच बीच में बातें कर देती है. अभी ज्यादा बंदा मतलब बड़ा लंबा मिशन हो गया. Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. लेट्स गो बे. चल थोड़ा स्वैग में आते हैं अपन. बताओ. Huffman! Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? व्हाट्स गोइंग ऑन. हाँ, सबसे पहले पूछ लेते हैं इसके माइंड में क्या है. सो कुड आई फर्स्ट आस्क व्हाट्स गोइंग ऑन. Yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out anything at all, come and find me. अच्छा हो गया भाई, बताया नहीं अपन ने डार्क नाइट हीरो के बद्दल. A war declaration sent by the Abyss Order? आई थिंक सो. This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. अभी यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसे है कि एबेस ऑर्डर ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है. तो नाइट्स कहना चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी उससे कांटेक्ट करा दो, जिससे कि हम उसके साथ लड़ाई कर पाए और वॉन्स्टैक सिटी को अपन हेल्प कर पाए, क्योंकि ये उसकी अकेले की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है. Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Favonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm Yeah. aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. You really should join forces with the knights. Stay at the winery until this blows over. मुझे लगता है कि साथ मिलके काम करना चाहिए. No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Yes. Ooh, the Abyss Order is really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way. But for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. Why would they send you a written message that only they can read? If they knew we can't read it, why did they write it in the first place? It's वो not देख लेते हैं एक बार. simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other.
Since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow. Seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. हाँ काटा छापा रहता है So वो. what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberish? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. यस हमारे तो अपन ने एक नाइट ऑफ फेमोनियस से मदद तो नहीं ले सकते क्योंकि जो ड्यूक के फ्यूचर्स प्लान्स रहेंगे जो कि आइडेंटिटी छुपा कर काम करने से वो खुल जाए, मतलब उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएंगी ना, तो वो अपने काम नहीं कर पाएगा. और सेकंड बात ऐसी है कि हमें इस लेटर को ने क्या डिकोड करना पड़ेगा जो कि मिसिंग पार्ट्स है इसके. अभी उसने कहा है कि बस पूछते रहो, जिससे उससे क्या पता किसी को पता होगा तो वो बता देगा. तो देख सकते हो ये जो डार्क होल है ना, ये पता लगा है मास्टर ड्यूक ने. तो हम आ चुके हैं मास्टर ड्यूक. This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on. There's no time to lose. माय गॉड, मुझे अभी ट्रायल मिलेगा फाइनली. एक मतलब देख रहे हो कितने 5-6 घंटे बाद या फिर 10-12 घंटे बाद रिकमेंडेड पार्टी. अरे कोई ना, 28 लेवल की है अपनी. तो यस अपन एक ये शील्ड ले लेते. एम्बर तो है. अरे यार मुझे ये लेना चाहिए था रे किया. मुझे थर्ड पार्टी यूज़ करनी चाहिए थी क्योंकि मैं देख सकती हो फाइनली मुझे लगा ही था. और इसकी देखो भाई, ले बेटे. और मैं क्यों बोल रहा था मालूम है क्या? ये देखो, लेट्स गो लेट्स गो. इसकी जो कायरो है ना वो बहुत तगड़ा है भाई, इसकी वजह से मैं बोल रहा था. सॉरी पायरो है का क्या आयरो है? ये देखो पायरो है, सॉरी पायरो है ना. ये बहुत अच्छा है भाई कैरेक्टर. 5 स्टार का कैरेक्टर है, देख लेना कभी भी. 5 स्टार का कैरेक्टर है, देख रहे हो? ये देखो 5 स्टार का कैरेक्टर है. ये भी 5 स्टार का है, ये भी 5 स्टार का. ये मिलना चाहिए रे मुझे ड्यूक, क्योंकि अर्ली गेम से में मिल गया ना, बहुत काम में आता है ये. लेट्स सी. पर ट्रायल तो मिल चुका है. आ जा, लेट्स गो. आजा आजा, ले बेटे. ओए हो, क्या कर रहा है तू? आजा, ले बेटे. भाई 3 मैंने शॉट मारे भाई उसके पायरों के. ये देखो, एक मार लेता हूँ इससे और दूसरा मार लेता हूँ और तीसरा भी ओपन हो चुका है. और मेन बात क्यू भी ओपन हो चुका है. सो मैं क्यू तो करने वाला हूँ, मतलब आगे जाके. यहाँ पे कुछ चेस्ट. चेस्ट तो देते जाओ यार. आजा आजा, ले बेटे. इसकी भी आई थिंक सो जड़ तलवार है. सो यस, यहाँ पे उरे में है. अरे भाग गया वो. आ जाओ, चलो क्यों छोड़ते अपन. ओ खतरनाक, एक ही शॉट मारता है वो. लेट्स गो. एक ही शॉट मारता है पर वो सबको उड़ा देता है. क्यों आ चुका है अपना? अरे यहाँ पे हूँ मैं. देख सकते हो. हाँ ये कॉम्बो है उसका आई थिंक सो. अच्छा ये जो है ना उसका मतलब बे एनर्जी अटैक, वो उसका कॉम्बो है. जैसे कि अपना ये देखो 1 2 3 और ये चौथा, ये ऐसा कॉम्बो रहता है ना एक पूरा. तो वैसे यार आई थिंक सो यहाँ पे तो तुम चेस्ट छुपा के रखोगे. इतना बावला नहीं हूँ मैं, बहुत खेल लिया अभी गेम मैंने. ये देखो यहाँ पे कुछ और रह सकता है. ओह माय गॉड भाई, नज़र अच्छी है बस मेरी. अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं मुझे. इसमें जितना लूट सकते हैं ना लूट लो भैया. ये एक्टिवेट है ना? हाँ. लेट्स गो. ओपन क्यू है हमारे पास. जो लास्ट फाइट आएंगे ना उसमें अपन क्यू यूज़ करेंगे.
इधर करने की जरूरत है, बट कैसे करूं? ये देखो अभी। लेट्स गो बे, आजा आजा, लेट्स गो। एक झपके में मार दिया मैंने इसके। और क्यों फिर से आ चुका है? आजा बेटे, आजा बेटे, आजा बेटे। ये देखो 3 बार अपन ई मार सकते हैं। और आई थिंक सो ये हो गया क्या? ये लास्ट है ना? आई थिंक सो। मारो इसको फिर। लेट्स गो। ओ भाई गलत सीन। अबे और लेट्स गो। आजा 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 भाई, ये 28 लेवल का है। 1 सेकेंड। कहाँ पे गया तू? रुक, मुझे मारने दे थोड़ा सा, हील बढ़ जाएंगी मेरे ड्यूक की। अरे यार ये तो मर भी नहीं रहा। हाँ बढ़ रही थोड़ी सी। हाँ मैं फंस गया। साले। बुलबुले छोड़ रहा है। आजा, थोड़ा सा हिल बढ़ा दे बस, मुझे आधी तो भी हिल होने दो बस। बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आजा आजा आजा, हिल बढ़ रही है। नाइस। आजा बेटे, आ ले बेटे। भागरा साला, वो वहीं पे रुक रहा है भगोड़ा। अबे यार आजा। आजा आजा और आजा। और क्यों ले लिया? अभी मर जा। अबे यार मैंने गलत चला दिया। लेट्स गो, लेट्स गो। सारे मर गए साले, एक क्वाइट में मर गए बस, क्योंकि वो तुम गधे हो। गधे हो गधे। I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan. What is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Burn him with the searing hand. Searing. Did you just use a pyrovision to shoot fire from your hands? It burns! Let's see how long it takes for you to crack. Stop, please! इतनी जल्दी? I beg you, make it stop! Interrogate him about their plan of attack. I'll talk. अस्थमा का मरीज। Please, stop! I'll tell you everything. Disorder. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. या भाई, टॉर्चर तो 2 सेकंड में हो गया वो तो। और मुझे ये ट्रायल के लिए ये बंदा बस बहुत खतरनाक था यार। मतलब देख रहे हो, 1 मारो, फिर 2 मारो, फिर 3 मारो, बस की टांग। But I have the information I need. I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc. Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's People Not to Tick Off Under Any Circumstances list. हाँ, डार्क नाइट हीरो। और आई थिंक सो उसको अपने को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कल मार खाने आ रहे हो, मतलब मारने आ रहे। मार खाने बोल रहा हूँ मैं, मारने आ रहे मॉन्स्टर सिटी के ऊपर हमला करने। और यस, If we do not make contact with the Dark Knight hero soon... Ah, it's you two. I must admit,
This issue of the Dark Knight Hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? Good one. But no. The Knights cannot afford to simply stand by and watch while there is even the slightest inkling of a threat facing Mondstadt. If that were the case, more and more people would start to rely on the Dark Knight Hero instead of the Knights of Favonius. हाँ, ये भी एक बात हो सकती है, अगर कोई बाहर का ही एक ही बंदा अगर मतलब तुम्हें बचा रहा है तो बस Oh, इश्यूज। well, what's the plan then? Find out the Dark Knight Hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight Hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight Hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight Hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight Hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Yeah, Captain Kaya! Lately, Kaya. Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight Hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. भैया काया के जो कॉन्टैक्ट्स है वो बहुत तगड़े भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मिशन है Saw a whole new side of the Knights of Favonius today. भाई। काया के कॉन्टैक्ट्स देख रहे हो, क्या हो गया इसको? हाँ भाई, उसने शर्त लगा लिया कि भैया तू मास्टर Doesn't ड्यूक को। understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight Hero is? मैं वही तो बोल रहा हूँ We भाई। need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. और मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि काया जो है ना वो अपना पीछा कर रहा है और इधर उसको मालूम पड़ जाएगा कि मास्टर ड्यूक ही है जो कि डार्क नाइट हीरो है। भाई ये बहुत तगड़ा मिशन है भाई कुछ भी कह लो भाई, क्या दिमाग लगा रहे हैं भाई। पर एक चीज तो है यार इसमें, काया का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि वही हार्बिंजर्स के साथ तो नहीं है, क्योंकि इतने तगड़े तगड़े कॉन्टैक्ट्स और इतना प्रिसाइजली क्लू शोधना या फिर सस्पिशियस किसी के ऊपर रखना, तो भाई। Master Diluc, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have Hmm. known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counter plan. Steer clear of the driver for a starter. Do you have any ideas? देख सकते Patience. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alabla? An alibi? Bye. If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on. Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you Huh? could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other preparations here in the meantime. मिस फ्लावर मेरे पास पड़े वाले हैं, तो अबे यार मेरे पास मिस फ्लावर पड़े वाले हैं, मैं दे सकता हूँ तुम्हें। क्या यार ये मिशन के ऐसी के तैसी साला। यू फोर मिस्ट फ्लावर। अच्छा अच्छा, इधर देना है क्या? तू बाहर आ गया है क्या? साल ले ले भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हैं। Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great. I can't wait to see how this turns out. So,
Are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness. The winery owner himself is addressing me directly. Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. भाई बताया नहीं उसने साला। What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Bank crash wolf. Yikes! What was that noise? Oh, cold. So cold. Oh, Master Diluc. Purification complete, sir. But the equipment... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly-ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental whiff. Can we test it out? Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. अच्छा उसने बॉम्ब बनाया क्या उससे? ऐसा है क्या? लेट्स सी। बॉम्ब्स बनाया उसने मिस्ट फ्लावर से। और ये देख सकते हो सेट अ बाट टॉक टू यस। And then... that's it? How long does it take before... ओ अच्छा ये इनको अट्रैक्ट करते क्या स्लाइम्स को? हाँ अब्बे से ऑर्डर के पास स्लाइम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इलेक्ट्रो कायरो जो ये उसके बाद आई थिंक सो फटना भाई। Holy moly, it really does attract slimes! And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We better get rid of them before they wreak havoc on the manor. ओके सो आई थिंक से ये बस अट्रैक्ट ही करते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं है। आ जाओ रे तुम भगोड़ो, थोड़ा सा मुझे हेल्थ दे दो। आ जा जिसकी हेल्थ बाकी है ना वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाना भगोड़े। अबे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे इधर मारो। मैं अभी तो ये तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बड़ी फाइट होने वाले है अभी। वॉर होने वाला है, वॉर। गॉड ऑफ वॉर बड़ा वाला राक्षस साले। आई थिंक सो सबके हो गए क्या? सबके हो गए क्या? हाँ सबकी हेल्थ हो गई, बस इसकी अभी हेल्थ नहीं जानी चाहिए। ओके नाइस। अबे ये भी बाकी है क्या? हाँ आई थिंक सो मुझे लीजा यूज करना पड़ेगा। भाई कितने सारे बे। डिफीट ऑल द स्लाइम्स। आजा बेटे। Such a powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for nothing. All right. So can you tell us what your plan is now? Yes, the plan is... ओके And so, I expect it to all go down without a hitch. Are you sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern, as per the plan. ओके मुझे प्लान नहीं पता है। Evening to meet Master Diluc at the tavern. ये रहा मास्टर ड्यूक। मैं यहाँ पे चढ़ के बताऊँ मुझे।
Greetings, Mr. Huffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. Ah, Traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple juice. और ट्रैवलर को कुछ भी नहीं. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Then I must regretfully ask you to come back when you can pay. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. ओके, तो ये पायमन का प्लान था. तो अपने को लीव करना है ट्रैवेंस. जैसे कि ये बंदा आया था ना, नाइट, और मास्टर ड्यूक के ऊपर नजर रखते हुए. Huffman मास्टर showed up ड्यूक तो नहीं आ just as सकते. expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. यस, यहाँ पे प्लेस करके ने कि अपन यहाँ पे बुलाने वाले उन लोगों को. नाइस. Whoa, you used all of it. This is gonna be pretty epic. लेट्स गो. Yikes, here comes the slimes. Quick, let's get to the tavern before anyone spots us. लेट्स गो. पकड़ लिया आपने को. हाँ या नहीं पकड़ लिया होगा. अपन सीधा यहाँ पे आ गए. चलो. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back. Is my apple juice ready? One moment. Mr. Huffman! Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... slimes! Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together! Whoa. Surely this couldn't be the Abyss Warder's secret weapon, but I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. अब भी मुझे पता चला जो पोशन से ने क्या इन्होंने दूसरे गेट के ऊपर ने क्या लगा दिए है, उससे ने क्या बहुत सारे स्लाइम्स जमा हो चुके हैं. अभी इस बंदे को ने क्या इसके ऊपर ध्यान देना था, लक्ष्य देना था, या फिर निगरानी देनी थी. अब इसको ने क्या उधर जाना ही पड़ेगा और अपन मार देंगे सामने के गेट पे जाके. And your response is to sit here drinking wine? It's like I've always said, the knights are not to be trusted. Master Diluc is right. My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? Quiet word? क्या बोलेगा? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Yes, तब तक काम भी तमाम कर देंगे बे. 10 सेकंड का खेल है अपने के लिए. Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. Oh my God. अभी I think so एक एक्शन सीन होगा. चलो गेट के ऊपर चलते हैं. वहाँ पे अपन फाइट्स करेंगे स्लाइम्स एबेस से ऑर्डर्स से. मतलब वो गैंग रहती है, ऑर्गेनाइजेशन रहती है एक, समझ जाओ. अभी जो भी पिछला एपिसोड नहीं देखता है तो यहाँ तक तो कोई देखेगा नहीं, मुझे पता नहीं. अगर देख रहा है तो कमेंट डाउन करो कि मैं देख रहा हूँ. आ जाओ सालो. There you are. ये माउस थोड़ा सा कुपरे में. हाँ अभी देखते हैं. मारो साले को, पकड़ के मारा. मुझे खेलना है. Will be the easy part. Shoot. Top. ले बेटे. Chop. ओ बटे दी सीन खतरनाक. ये सिनेमैटिक बहुत तगड़ा था बे.
ये बोल रहा हूँ भाई, ये 80 के उसका, ये अगर मिल गया ना, भैंस की टांग, ये रिवाइव कर दिया इसने तो। आ जा, आ जाओ, आ जाओ सालो, मुझे मारोगे, आ जा बेटे, वो उधरी के ले बेटे, और ले, और ले, और ये ले बे, आ जा, आ जा, भूतनी के, आ जा, आ जा, तेरे लिए तो क्यों भी नहीं चलाता हूँ मैं, पर क्यों चलाना है मुझे, क्यों चलाना है मुझे, आ जाओ, यहाँ से कर लेते अपन, ये यहाँ से क्यों, क्योंकि एक लाइन में सारे के सारे। ओ भैंस की टांग, आ जा, आ जा, आ जा, ओ स्पेस 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 स्पेस, ले बेटे, पहले इनको मारना पड़ेगा। हाँ मुझे लगा ही था, ये इसको मारना है, आ जा, आ जा, वो एक राना, आ जा, ले बेटे, अबे यार इसके शील्ड हमने देखा ही नहीं बे, आजा, ले बेटे, ले बेटे, आ ले, हो उधरी के मार रहा तू कितने देर से, ये उधर उधर का प्लान, इधर उधर का प्लान, साले। Classic Master Diluc. Not a baddie left standing. Nothing more than a few hilly churl. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the town. हाँ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, फटाक से चलो, भागो 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 भागो, क्योंकि वो नाइट्स आना नहीं चाहिए। Glad that's settled. Let's get back to the tavern. You think Huffman is back yet? हाफमैन, हाँ हाफमैन है उसका नाम। तो यहाँ पे गार्ड्स भी भाग गए, आई थिंक सो वो स्लाइम्स ने अटैक कर दिया ना उसकी वजह से। सो ओके, हम आ चुके हैं। Huffman hasn't yet returned. He made it in time. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Master Diluc, please, have you no respect at all? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? अरे स्वेटिंग तो नहीं कर रहे हम। Is it? But if that's the case, why are you also out of breath? ओ फंस गए। Huffman is getting suspicious. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire? Did you see Master Diluc, today's bartender? Did you see him leave just now? Yikes! He's asking other customers. We're done for. Master Diluc? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the knights. Oh. Never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. ओके, How odd. अच्छा हो गया आपने आइडेंटिटी बताई नहीं, पर हाँ यार उसने आइडेंटिटी बताई नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं। Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. They're all in on it? Not all of them. Or should I say, not all of us. Kaya, where did you come from? मुझे लगा था ये बंदा बैठा होगा बाहर में, क्योंकि इसको परवाह नहीं है। I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine wine. अच्छा ये देखो, ये दोनों ही मॉन्स्टर सिटी के लिए काम करते हैं, बट ये नहीं कि मॉन्स्टर सिटी के जो नाइट्स है ना उसके अंडर काम करता है, और मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के, और ड्यूक ने के मास्टर ड्यूक ने के अंडर काम नहीं करता है, मतलब उनके रेगुलेशन से थोड़ा सा काम नहीं करता है। और इसको जो रिस्पेक्ट मिलते हैं ना, आई थिंक सो वो इससे जलता है किया, तो काया सॉरी, तो काया ने क्या वो रिस्पेक्ट पाने के लिए यह हरकतें करता है। So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, Diluc. You know me better than that.
I have no interest in exposing secrets. I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go, and you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right, all right. I have no further need of wine to entertain myself tonight in any case. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, Diluc. I hope you all have a wonderful night. ओह भगवान, इससे कब छुटकारा मिलेगा क्या पता। What was all that about? पर ये वो काया बहुत तगड़ा है बे, मतलब काया और ड्यूलुक जो है ना, ये बहुत तगड़े कैरेक्टर है, अपने को बाद में बहुत काम में आएंगे। क्योंकि काया का एलिमेंटल जो ये रहता है, मतलब कि क्यू रहता है या फिर 80 के रहेंगे ना, वो बहुत जल्दी आ जाता है अपने पास, तो अपन फुल्ली अटैक चार्ज अटैक मार सकते हैं जल्दी से। This is a token of my gratitude. Wow! Thanks, Master Diluc. I'm in the habit of working alone, but I did enjoy having your assistance this time. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. तू मेरे साथ चल ले जर्नी में प्लीज। कंप्लीटेड, नाइस, क्वेस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है फाइनली।